अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अयान दुबई व्लॉग्स। गाइज़, जैसा कि आप लोगों ने जो है ना मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, पेरिस डिस्नीलैंड की थी, जो फ्रांस की जो है ना कैपिटल है। और आज का जो है ना विज़िट जो है ना, आज इंशाल्लाह पेरिस सिटी का आज विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और एफल टावर भी बहुत फेमस है यहाँ का जो है ना, उसको भी इंशाल्लाह साथ में मिल के देखेंगे। और इसकी जो अच्छी अच्छी जगह हैं वो भी साथ में मिल के देखेंगे। ये पीछे जैसा कि देख रहे हैं आप, ये एफल टावर है, ये पेरिस का बहुत ही जो है ना फेमस जो है ना ये टावर है। इसकी हिस्ट्री है, इंशाल्लाह वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ का वेदर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का वेदर है। कभी थोड़ा सा बारिश होती है हल्की हल्की, और कभी जो है ना थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी सी धूप है, इससे कुछ टाइम पहले रेन हो रही थी हल्की हल्की जो है ना। इसके अलावा ये जो है ना इंशाल्लाह अभी पहले जो है ना सिटी का टूर करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह एंड में एफल टावर पे इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से आपको इंशाल्लाह पूरी सिटी भी दिखाएंगे एफल टावर से भी। इसके अलावा आज हम जो है ना फेरी पे भी बैठेंगे, और वहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलेगा। ब्रिजेस जो वहाँ की मशहूर हैं ये पेरिस की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। फेरी का जो है ना वहाँ से एफल टावर के बिल्कुल करीब ही है वो फेरी जो चलती है, उसका भी टूर दिखाएंगे। और वहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये बिल्डिंग्स जो है ना, ये बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। ये नए शादीशुदा जोड़े भी आए हुए थे पिक्चर्स लेने। और ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और फेमस स्क्वायर है, बहुत बड़ा है। और ये देखिए पीछे गिलास का बहुत ही बड़ा पिरामिड है, बहुत मशहूर है ये। और जितना भी लोग विज़िट करने आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं जो है ना। तो मैं यहाँ मेरी फैमिली के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे फादर अल्लाह भी साथ में हैं, और जो है ना मेरा बेटा भी बहुत एंजॉय कर रहा है। सब ली है मैंने, और ये मेरे फादर इन लॉ हैं मेरे साथ में, अयान के साथ में। अब जो है ना ये स्टोरी आपको जो है ना इनके ज़बानी सुनी है मेरी जो है ना टूरिस्ट गाइड है लेडी। I will show you the entrance to the tunnel. So that was precisely 20 years ago. It was a night, very early morning, between 30th and 31st of August. Princess Diana and Dodi Al Fayed on your left to this tunnel. So we're going the opposite direction. They were entering the tunnel from this side on your left. Inside the tunnel, there are several central pillars. As they were driving 140 kilometers an hour, so they were driving really very fast. The driver, and it was not a professional driver, his name was Paul Henry, so he was the security guy from the Ritz Hotel. First of all, he was not a professional driver. Secondly, they were driving too fast, more than 140 kilometers an hour. And thirdly, the driver was not sober, he was drunk. So he turned a little bit too much to the left, and they crashed into the central pillar in this tunnel. Dodi Al Fayed, Princess Diana's lover, he died on site. Princess Diana, she stayed alive for a couple of hours. They brought her into operational hospital Salpêtrière, and this is where she died. So this year it was a very special year. And the name of this bridge, Alexander III. Alexander III Bridge. It was named after the Russian Tsar, Alexander III. The one signed the peace agreement between France and Russia in the 19th century. And this bridge, it's really unique. So many people, they come here to make beautiful pictures. During the weddings, for example, people come here as well. During the Paris Fashion Week, top models, designers, they come here for sessions of pictures. If you know Adele, the British singer, someone like you, her famous hit, watch the video, you will see again this bridge, Alexander III. And this bridge, Alexander III Bridge behind us, and the two palaces behind the bridge. Today, it's the Napoleon's tomb, this place. It's mainly famous, so it's called the Invalides. Now I'll explain you what it means in French. But most tourists, most people, when they come to this place, they come here in order to visit Napoleon's tomb, Napoleon I, Napoleon Bonaparte, so this famous French emperor who built the Triumphal Arch in Paris.
He's buried now here in this building called the Invalids, precisely in the Golden Dome. So the Golden Dome, that's a former royal chapel, but everything around this Golden Dome, it's also the part of this big complex. This is the Military History Museum of France. So altogether, it's on one side the Military History Museum of France, the biggest military history museum in this country, and also Napoleon's tomb. But the whole place, the whole complex, it's called the Invalids. And this word in French means war veterans. So originally this place was not built for Napoleon Bonaparte. It was built more than 1 century before Napoleon Bonaparte. It was built under Louis XIV, the Sun King. That was the most famous French king. The king who built Versailles, the Palace of Versailles, outside Paris. His symbol, the sun. Now if you look on your right, from both sides of the gate, the entrance to the Invalids, you can see this symbol, the sun. That's the symbol of the Sun King, Louis XIV. He was the king at the very end of the 17th, beginning of the 18th century. He had many wars, many military campaigns against the Habsburg Empire. And for the war veterans, he built this complex called Les Invalides, the Invalides. So Les Invalides in French, it means war veterans, because that was at that time, that was the house for war. अच्छा जी, अभी जो है ना ये एफल टावर के नीचे से फेरी चलती है। ये देखिए पीछे एफल टावर नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल करीब से, अब ज़्यादा करीब आ गए हैं। पहले ये जो है ना यहाँ पे जो है ना फेरी का जो है ना टूर करते हैं, आपको ये सारी ब्रिजेस वगैरह भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा मंजर है, वेदर भी बहुत अच्छा बना हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और जो है ना आगे अभी ये सामने देखिए लेफ़्ट जो है ना पूरी सिटी है, और ये है ना ये ब्रिज देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दुनिया से आते हैं यहाँ पे जो है ना टूर के लिए, क्योंकि जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी दिख रही होगी। यान साहब को भी मैंने कहा थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े होके थोड़ा सा अच्छी सी वीडियो बनवाओ। और जो है ना ये देखिए उसके पीछे देखिए कितना प्यारी सी जो है ना ये कि पूरे फेरीज बहुत खूबसूरत से बहुत सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सब दुनिया से जो लोग आते हैं तो सबको सहूलत हर किस्म की मिलती है उस हिसाब से। ये देखिए इसके बाद जो है ना हम लोग अभी चलेंगे एफल टावर पे। जी अब एफल टावर पे आ चुके हैं। ये देखिए मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ इसका मंज़र एफल टावर का। ये देखिए आप ऊपर देखिए, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि 1889 में बना था, स्टार्ट हुआ था बनना, और ये 300 मीटर जो है ना इसकी हाइट है। उस टाइम के सबसे हाईएस्ट टावर था जो है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 ईयर कंप्लीट होने पर बनाना शुरू किया था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो है ना जो है ना एक हिस्ट्री जिससे बन सके। तो जैसा कि ये अपने टाइम का बहुत जो है ना सबसे बड़ा टावर था, और वाकई उस टाइम से जो है ना और बहुत खूबसूरत भी बना हुआ है और बहुत दूर से नज़र आता है ये तो अभी का। और ये देखिए ऊपर से इसका व्यू देखिए ये पेरिस का, और इसकी जो है ना खूबसूरती देखिए आप, जो है ना पूरे जो है ना यहाँ पे जो है ना पूरी सिटी का व्यू आता है ये ऊपर टॉप पे जाके जो है ना। अभी तो जो मैं जहाँ रहता हूँ दुबई में जो है ना सबसे बड़ी बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड में ही है, बुर्ज खलीफा है। और जो है ना लेकिन ये अपने टाइम में उस टाइम में सबसे बड़ा टावर था जो है ना। जी आप भी देखिए ये व्यू पेरिस का, और देखिए वगैरह बनी में कितना खूबसूरत हैं। और जो है ना अयान को भी बहुत अच्छा लगा, अयान भी बहुत खुश है, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वाकई ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत अच्छी है। आपको जब टाइम मिले लाइफ में तो आप लोग भी गाइस जो है ना विज़िट कीजिएगा यहाँ का एफल टावर का। और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।